Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing about the topic that is CoBRA. CoBRA is cost estimation, benchmarking and risk assessment. CoBRA is an effort estimation model. This is a new topic and we have to understand this topic collectively. This is a very lengthy topic and this topic is comprised of almost 4 to 5 parts. Today we are discussing part 1. In the part 1 we will discuss only the introduction of this topic and a little bit about terminologies used in the topic. Let's start. Let's have a recap. In the previous lecture we have discussed about project management methodologies, that is PERT is a technique in which we have almost 3 to 4 estimates and it is more reliable than CPM. I hope you have understood this topic. If you have some questions, we will discuss in the online session. Today we are discussing about CoBRA, that is effort estimation model. We will have some practical examples, graphical illustration, guidelines from practice, illustrations of real-world CoBRA usage, application cases from various industry contexts, and we will have some exercises also. After the completion of the lecture, we will have summary of the lecture as well. आप सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि हम लोगों ने एक तरीकाकार बनाया हुआ है कि हम ज़्यादातर लेक्चर्स अपने मोटिवेशनल कोटेशंस पर ई-लर्निंग से स्टार्ट करते हैं. ये हमारे लिए फूड फॉर लर्निंग है. So let's start. If you are not benchmarking your performance against your competitors, you are just playing with yourself. आप लोगों को पता है कि किसी भी इंडस्ट्री में competitors हमेशा मौजूद होते हैं और हम लोगों ने अपनी स्किल्स के साथ, अपनी अफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ उन competitors को बीट करना होता है. To me, business is an ultimate sport. It's always on. There is always someone trying to beat me. तो बिजनेस में जो आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके राइवल्स हैं, वो आपको अपने इनोवेशन से, अपने अफेक्टिव मैनेजमेंट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स से, अपने टैक्टिक्स से हमेशा बीट करने के लिए तैयार है और आपने उनका हमेशा मुकाबला करना होता है. नोबडी इन दिस इज एन इंडस्ट्री ऑफ वन. कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है. तो हर एक इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे हैं. इसी तरह से आईटी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बेशुमार लोग काम करने वाले हैं जो अपनी इनोवेशन से, अपने स्किल्स के साथ, अपनी अफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ एक्सेल कर रहे हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके राइवल्स हैं, जिनके साथ आप लोगों ने compete करना. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोबरा. उसके बारे में आइकॉनिक फिगर्स क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस तरह से रिसर्च डायरेक्टरेट, रिसर्च सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जापान में बंदा काम कर रहा है, वो कोबरा के बारे में क्या कहता है और बाकी जो मैनेजर्स हैं वो क्या कहते हैं, उसको देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कोबरा कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है आईटी बिजनेस में. द कोबरा मेथड इज अ वे ऑफ इंटीग्रेटिंग द आर्ट एंड साइंस ऑफ software estimation. It is usually believed to be a black art. The CoBRA method satisfies the black art of the software estimation. The most difficult task in software development is software estimation, effort and cost. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक ब्लैक आर्ट के तौर पे जाना जाता है. तो ये इस ब्लैक आर्ट को अनवील करने का एक इफेक्टिव टेक्निक है. We had not been able to imagine building our own software estimation models until we encountered the CoBRA method. CoBRA is the most effective method being used in software industry as far as the combining project data and expert judgment for the purpose of software estimation is concerned. What other iconic figure says about CoBRA? We use the CoBRA method for early stage estimation of software integration projects.
we were very satisfied with CoBRA because we could easily model relevant cost drivers that are specific to our own context as well as base development productivity. Cost drivers को estimate करने के लिए CoBRA most effective tool है. I am convinced that the CoBRA method has a high potential of resolving acquisition issues related to the accountability of software costs in IT business, which enduringly persists on the side of IT customers. That is because the models are very simple and easy to build and can be understood even by non-IT professionals. This is said by a General Manager Information Systems. तो ये वो खूबसूरत से अल्फाज हैं जो लोगों ने कोबरा के बारे में कहे कि कोबरा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा एस्टिमेशन मॉडल है जो वाइडली आईटी बिजनेस में यूज हो रहा है. So what is CoBRA? Cost estimation, benchmarking, risk assessment, combines human judgment and measurement data in order to systematically create a custom specific effort estimation model. For whom CoBRA effort estimation model is being used, project managers and project estimators are effectively utilizing this method for the development of software systems. इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में हम ज़्यादातर जिन चीज़ों के बारे में जानेंगे वो कोबरा का इंट्रोडक्शन है और जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं कोबरा को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको हम समझेंगे. तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट पेड चार्जेस फॉर समथिंग. सेकेंड इज एफर्ट, द टोटल वर्क डन टू अचीव ए पर्टिकुलर एंड. एफर्ट ज़्यादातर मैन पावर से रिलेटेड है, जबकि जो कॉस्ट है वो ज़्यादातर एक्सपेंस से रिलेटेड है. And the third is service. In software engineering, the literature and practices as a synonym for effort. Software engineering के अंदर दोनों terms synonymly use होती हैं. चौथी term है estimation, the act of judging tentatively or approximate the value. किसी भी एक चीज़ की approximate value को find करना estimation कहलाता है. Prediction, the act of declaring in directing in advance. किसी भी एक चीज़ को बिफोर द टाइम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन है. प्लानिंग, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग और कैरिंग आउट प्लान्स. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. प्लानिंग इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स फॉर द डेवलपमेंट. वाई सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन. सबसे पहला एक वाइटल क्वेश्चन है जो हमें अपने आप पूछना है कि हम एफर्ट एस्टिमेशन क्यों करना चाह रहे हैं. सॉफ्टवेयर इज गेटिंग कम्प्लेक्स. सॉफ्टवेयर बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस इन द मीनवाइल. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज गेटिंग कम्प्लेक्स मीन्स rigid requirements, software functionality, quality, cost and time to market. There are several external constraints that make software development a very complex task. Development technologies and paradigms change, development distribution increase. Software development is still largely human intensive effort. Humans are involved in the development of software engineer at large. 80% of the software work is intellectual. Fair amount of it is creative, little is critical. The software development is intellectual activity. Software human product is in abstract character. Therefore, it is very complex. The complex and multi-dependent character of software development make managing software projects challenging task. An organization's survival and growth require effective means of managing software projects. Software project management is key to success. And for the effective software project management, we must have effective estimates. Software projects also require effective management. Effective project management require considering numerous issues: financial success, effective use of resources, analysis of market potential, opportunities, innovation, the learning environment. The most and vital
vital ingredient for successful management is effort estimation. Therefore, we are studying an effort estimation model, that is CoBRA. Effort estimation is the basic for effective management. Barry Beham, a very familiar and a pioneer, iconic figure in software development is Barry Beham. You already know. I hope you already know about the name of this person. Poor management can increase software cost more rapidly than any other factor. What says about effective poor management, effective estimation? What Glass says about effective estimation? Point out that poor effort estimation as one of the two most common causes of runaway projects, besides unstable requirements. Requirement volatility is the second one which causes the runaway projects. This person, I cannot pronounce the name of this person. In her survey of more than 1,000 IT professionals, reports that 2 out of the 3 most important causes of IT projects failure are perceived to be related to poor effort estimation. Therefore, we come to know that effective project management requires reliable effort and schedule estimates. What is a good estimate? A good estimate is one that supports a project manager in a successful project management and successful project completion. एक अच्छा एस्टिमेट वो होता है कि जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कामयाब कर दे और जिसका कम से कम ओवरहेड हो. Several effort estimates has been proposed in recent decades. Each estimate method has strengths and limitations, but largely depend on the context in which it is applied. Methods represent one of the two extreme estimation strategies: expert-based and data-driven. The first, effort prediction on the judgment of human expert. Later group uses only measurement data to derive effort. अब हम क्यों कोबरा मेथड को यूज करना चाहते हैं? ये जॉनसन और बेहम propose the hybrid method which combine the strength of both strategies being applied. Combination of estimation approaches can substantially improve the accuracy of the estimates. Combine multiple estimation paradigms such as expert-based and data-driven and hybrid method, combining multiple estimates provided by independent methods. तो हम इसलिए कोबरा को यूज़ करना चाहते हैं कि ये जितनी भी अप्रोचेस, चाहे वो एक्सपर्ट बेस्ड हो या डेटा ड्रिवन हो, उनको कंबाइन करता है और बेटर एस्टिमेट्स देता है. इसकी एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी है. फिर मिनिमल डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं. हाई एक्यूरेसी इस तरह से कि इसका जो एस्टिमेशन एरर है वो 9% से 14% तक है, जो बहुत ही मिनिमल है. और दूसरे उसके एडवांटेजेस ये हैं कि रीजनेबल कॉस्ट मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को सपोर्ट करता है. फिर कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट है इसके अंदर इनबिल्ट है. ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है. The principles of CoBRA methods are the cost estimation, benchmarking, and risk assessment method combines multiple prediction approaches. And it aggregates techniques represented expert-based and data-driven. Nominal effort is the engineering and management efforts spent on developing a software product of certain size in the context of nominal project. A nominal project is a hypothetical idea project in a certain environment of an organization, in a business community. It is a project that runs under optimal conditions. That is a project where all environment characteristics having an impact on the project effort are at their best level. From the start of the project refers to the realistic level that are possible in a certain context.
एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में जो पॉसिबल ऑप्टिमल कंडीशंस हो सकती हैं उनको कंसिडर करते हैं. Effort overhead is the additional spend on overcoming imperfections of a real project environment. ये rework होता है, inefficient skills होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट टीम के, वो एफर्ट है ओवरहेड को कॉज करते हैं. तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि एफर्ट ओवरहेड कम से कम हो. Nominal productivity refers to the development productivity under optimal project conditions. कोई भी एक प्रोजेक्ट जो ऑप्टिमली जितने टाइम एंड कॉस्ट में डेवलप किया जा सकता है उसको नॉमिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं. So the difference between nominal and actual productivity is called productivity loss, is proportional to the portion of additional non-productive एफर्ट. जितनी ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव एफर्ट होगी उतना ही प्रोडक्टिविटी लॉस ज़्यादा होगा. प्रोडक्टिविटी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्टिविटी इज साइज ओवर एफर्ट, साइज इन किलो लाइन ऑफ कोड एंड एफर्ट इज इन मैन मंथ or other units, some other units. What are the components of effort model? CoBRA implements the idea of nominal projects, efforts and effort overhead through two basic components of an effort model, the effort overhead model and the productivity model. तो हमारा जो CoBRA मॉडल है, जो एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल है, वो दो कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, एक एफर्ट ओवरहेड मॉडल को और प्रोडक्टिविटी मॉडल को. तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को क्लोज करते हैं और अपनी डिस्कशन को हम, आप लोग जानते हैं कि हम अमूमन एक बहुत अच्छे से शेर पे कंप्लीट करते हैं. तो आज हमने जिस शायर के शेर का इंतखाब किया वो अहमदुद्दीन कासमी है. जो दिल दुखा है तो ये अज़्म भी मिला है हमें, तमाम उम्र किसी का न दिल दुखाएंगे हम. यहाँ पे हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं. हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे भी कोबरा ही को हम कंटिन्यू करेंगे. मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि इसके 4 to 5 पार्ट्स हैं. आज हमने उसका सिर्फ पहला पार्ट किया. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.